Hello students, Jai Shri Swaminarayan. Now let's move forward. Exercise 14.2, question number 8. First of all, read this question. Here, 30 children were asked about the number of hours they watched TV program in the previous week. The results were found as follow: 1, 6, 2 and likewise. Now question is, make a frequency distribution table for this data taking class width 5 and one of the class interval 5 to 10. And second question is, how many children watch television for 15 or more hours a week? Okay, total 30 details we have. We have the details for 30 children. How many hours they watch the TV? Okay, now we need to make a frequency distribution table. In that, class width is 5. Okay, class width that means class length. Class width, class length both are same. Okay, so class length is 5 and one of the class interval is 5 to 10. Okay, so we have class width 5, class interval 5 to 10. Now take this data and find out the smallest value. Okay, so here smallest value is 1. Smallest value is 1 and we need to cover that value. So we need to start with the 0 to 5. Right? Because in 0 to 5, 1 is covered. Now find out the maximum value. So here maximum value is 70. So we need to cover this maximum value. Okay, so last we need to write up to the 15 to 20. So first of all, here number of hours is given to us. Okay, number of hours is given to us, so number of hours. Now here we need to write the class interval, right? So our class. Now our minimum value is 1, so we need to cover it. So our first class is 0 to 5. After that 5 to 10, then 10 to 15 and 15 to 20. So students, here our largest number, that is 17, that is covered in 15 to 20. So after that we do not need to write the class. Okay, here we can stop our class interval. Now after making the class intervals, what we need to do? We need to write the telemarks, right? So here telemarks. So students, here we make the class interval and in that it is given in the equation one of the class interval is 5 to 10. So here we cover it 5 to 10. Okay, so here we put the gap of 5. That means class length हमने कितनी रखी है 5 का गैप दिया है और एक क्लास इंटरवल हमारा 5 to 10 भी आ गया. तो जो क्वेश्चन ने जो कंडीशन दी है वो सेटिस्फाई हो रही है. Okay, now telemarks. So now look at this number horizontal wise. So first of all 1. So 1 lies between 0 to 5. So here, then 6 that is covered in 5 to 10. So here telemark. Then 2 here, 3 here, then 5. Now 5 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है. हमें किस में कंसीडर करना है? नीचे वाले में. तो यहाँ पे टेलीमार्क आएगा. Then 12 और 10 to 15 में. Then again 5. So here, then 8 यहाँ पे कवर होगा. 4 यहाँ पे again 8 4 हो गए तो फिफ्थ टाइम में आया तो क्रॉस लाइन करेंगे. Now second line 10 यहाँ पे भी और यहाँ पे भी. हम किस में रखेंगे? नीचे वाले में. Then 3 4 then 12 then 2 8 15 नीचे वाले में जाएगा 1 17 6 then third line 3 2 8 5 9 6 8 7 14 and 12.
So now frequency F, that means number of students. Okay, so here number of students, that means our frequency. Okay, so count this. Now this is 5, 5 plus 5, 10. 5, 10 plus 3, 13. Here 5 and here 2. Now find out the total. 13 plus 10, 23 plus 5, 28 plus 2, 30. और बोला भी गया था कि टोटल 30 स्टूडेंट्स के बारे में डिटेल्स है, सो टोटल 30 हमारा होना चाहिए था, वो 30 हुआ है. Okay, so here our frequency distribution is over. Okay, here draw the total with the pencil and scale. So here we have our frequency distribution table. One more time student, I tell you, यदि आपको टेलीमार्क्स में पता नहीं चला कि कैसे आ रहे, तो डायरेक्टली भी आप काउंट कर सकते हो कि 0 to 5 के बीच में कितने नंबर्स है. डायरेक्टली आप काउंट करो और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिख सकते हो. बट ध्यान में रहे, जब 0 to 5 हम काउंट कर रहे हो तब उसमें 5 नहीं आना चाहिए, क्योंकि 5 हम किसमें कंसीडर कर रहे हैं, नीचे वाले में. ओके, यहाँ पे भी 5 to 10 है, तो इसमें कौन कौन से नंबर कवर होंगे, 5, 6, 7, 8, 9. 10 इसमें नहीं आएगा, वो नीचे वाले में जाएगा. यहाँ पे 10, 11, 12, 13, 14. यहाँ पे 15, 16, 17, 18, 19. ओके, सो उस हिसाब से हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यहाँ पे बना है. नाउ सेकंड क्वेश्चन इज, हाउ मेनी चिल्ड्रन वॉच टेलीविजन फॉर 15 और मोर आवर्स अ वीक. How many children watch television for 15 or more hours? अब आप डायरेक्टली भी काउंट कर सकते हो कि 15 और मोर, मतलब 15 को भी कंसीडर करना है, उनसे ज्यादा भी कंसीडर करना है. तो यहाँ पे आप देखो कि 15 और 15 से ज्यादा हो वैसा नंबर कितनी बार आ रहा है. दैट मींस कि कितने ऐसे स्टूडेंट हैं, कितने स्टूडेंट से वो फाइंड करना है. तो कितनी बार वो नंबर्स आ रहा है वो हमें फाइंड करना है. जितनी बार आ रहा होगा उसका मीनिंग ये है कि उतने स्टूडेंट 15 से भी ज्यादा आवर्स तक टीवी देखते हैं. ओके, यदि उसमें काउंट ना करना हो तो डायरेक्टली भी हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से वो फाइंड कर सकते हैं. नाउ 15 और मोर देन 15, इट इज कवर्ड इन दिस क्लास. 15 और मोर देन 50 वो इस क्लास में है, क्योंकि यहाँ पे नंबर्स कौन से हैं, 15 to 20. नाउ 15 to 20 इट मींस व्हाट, 15 और मोर देन 15. सो वैसे कितने स्टूडेंट हैं, 2. इसका मीनिंग ये हुआ कि दो स्टूडेंट ऐसे हैं जो 15 और 15 से भी ज्यादा आवर्स तक टीवी देखते हैं. सो हियर आवर आंसर ऑफ सेकंड क्वेश्चन इज two students watch TV for 15 or more than 15 hours in a week. Okay, so total 2 students watch TV for 15 or more than 15 hours. और डायरेक्टली भी हम काउंट कर सकते थे, और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से तो डायरेक्टली पता चल जाता है कि 15 और 15 से ज्यादा और इस क्लास में कवर हो रहा है. इनके सामने फ्रीक्वेंसी 2 है, दैट मींस 2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मोर देन 15 आवर्स तक टीवी देखते हैं. ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. क्वेश्चन नंबर 9. फर्स्ट ऑफ ऑल, read this question. Here a company manufactures car batteries of particular type. The lives of 40 such batteries were recorded as follow in years 2.6, 3, 3.7. Okay, likewise, now construct a group frequency distribution table for this data using class intervals of size 0.5 starting from the interval 2 to 2.5. Okay, here lives of 40 such batteries was recorded as follow. We need to construct a group frequency distribution table for this data using the class intervals of size 0.5
Now size, that means class length, class size, both are 7. So class length is 0.5 and starting from the interval 2 to 2.5, that means our first class interval is given to us 2 to 2.5. Then even just find the smallest value here. So find out the smallest value, it is 2.2, right? And find out the largest value. Find out the largest value, that is 4.6, right? Largest value is 4.6. Smallest value is 2.2. Largest value is 4.6. So we need to cover our smallest value and largest value. Okay. So here, first of all, we need to make the class intervals. So in that, life of battery is given to us. Okay. So here we have life of batteries, and it is given in years. So life of batteries, that means our class interval. Okay, our first class is 2 to 2.5 because smallest value is 2.2. That is covered in this class, and that is already given to us in question. Just start your class interval with the 2 to 2.5. Now class size is given to us 0.5. That means our class length is 0.5. So our next class 2.5 to 3. Why? Because our class length is 0.5. So 2.5 plus 0.5 3. ओके, मतलब कि हमें गैप जो रखना है इन दोनों के बीच का वो कितना रखना है 0.5. तो हमें क्या करना होगा, 2 to 2.5 हो तो दिया, अब यहाँ पे 2.5 आएगा, उसमें क्लास लेंथ आप ऐड कर दो, 0.5 ऐड कर दो तो क्या आएगा 3. नेक्स्ट, अब ये 3 है तो यहाँ 3 से स्टार्ट होगा, 0.5 ऐड करो तो 3.5, 3.5 अगेन 0.5 ऐड करो 4, नाउ 4 again 0.5 ऐड करो 4.5 एंड अगेन 0.5 ऐड करो 5. अब आप देखो कि बिगेस्ट वैल्यू जो है वो है 4.6. सो नाउ 4.6 दैट इज कवर इन दिस क्लास. ओके, सबसे बड़ी जो वैल्यू है वो भी यहाँ पे कवर हो जाएगी, तो इनके आगे हमें क्लास लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हम स्टॉप करेंगे अपने प्रोसेस. ओके, नाउ after making the class interval, our next step is tally marks. Okay, so we just go through the horizontal wise. Our first number is 2.6, that is covered in this class, so here we need to mark the tally marks. Then 3.0 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, लेना किसमें है, नीचे वाले में. Then 3.7 इनके लिए तो कोई इश्यू नहीं है, वो इसमें ही आएगा. 3.2 यहाँ पे आएगा, 2.2 here, 4.1 here, 3.5 नीचे वाले में लेंगे, यहाँ पे आएगा, एंड 4.5 वो भी नीचे वाले में आएगा यहाँ पे. देन सेकंड लाइन 3.5 नीचे वाले में, 2.3 here, 3.2, 3.4, 3.8, 3.2, 4 हो गए तो फिफ्थ टाइम हम क्रॉस करेंगे. देन 4.6, 3.7, थर्ड लाइन 2.5 नीचे वाले में, 4.4, 3.4, 3.3, 2.9, 3 नीचे वाले में लेंगे, 4.3, 2.8, then fourth line 3.5 नीचे वाले में, 3.2, 3.9, 3.2, again 3.2, 3.1, 3.7, 3.4, then fifth line 4.6, 3.8, 3.2, 2.6,
3.5, 4.2, 2.9, and at last 3.6. Okay, so now frequency that is represented by f. Okay, now count this telemarks. So here 2, 5 plus 1, 6, 5 plus 5, 10 plus 4, 14, 5 plus 5, 10 plus 1, 11, here 4, here 3. Now find out the total. 6 plus 2, 8, 14 plus 8, 22, plus 11, 33, plus 4, 37, plus 3, 40. So here that is already given in the equation. This is the data of 40 batteries, right? This is the data of 40 such batteries. So our total is 40. Okay, so now our frequency distribution is ready, and here our question is over. Okay, so just draw the table with the pencil and scale. ओके, सो बेसिक प्रोसेस यहाँ पे क्या है सभी क्वेश्चन में कि जब भी ऐसे नंबर आए लाइक 2.5, 3.5, 4, ये नंबर ऐसे है जो यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, नीचे वाले क्लास में उसको कंसीडर करते हैं। मान लो कि इनके बीच का नंबर है 3.2, तो उसके लिए तो कोई इश्यू है ही नहीं, वो तो यहाँ पे ही आएगा, उनके लिए कोई इश्यू नहीं है। ओके, जैसे 3.7 आएगा तो कंफर्म है कि यहाँ पे ही आएगा, उसमें हमें और चीज नहीं देखनी है। बट ये जो बाउंड्रीज है, ऐसे नंबर आए लाइक 2.5 आया तो हमें यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो नीचे वाले में कंसीडर करना है, बाकी जो भी नंबर्स है उनके लिए कोई इश्यू नहीं है। ओके, तो ऐसे ऐसे हम टेली मार्क्स को मार्क करते जाएंगे, 4 तक करना है, कहां तक, 4 तक। पहली बार आए तो फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम आए तो उसको क्रॉस करेंगे, फिर 6 टाइम, 7 टाइम, 8 टाइम, 9 टाइम, 10 टाइम आएगा तो क्रॉस, और लास्ट में काउंट करने में भी ये इजी रहता है। 5 plus 1 6, 5 plus 5 10 plus 4 14, 5 plus 5 10 plus 1 11, likewise. Okay, so students, here our exercise 14.2 is complete. Now if you have any doubt in this exercise, please write down in comment section, I will give you the answer. Thank you.